Hello class. Now class 11th. Today we are starting with the projectile motion. Now let us, I think those vector questions, numericals you have tried. Okay. So if you have any problem in that, you can ask me in the WhatsApp. So today I am starting with the projectile motion. Now first of all, let me tell you what is projectile motion. Now suppose we have thrown a body. किसी बॉडी को हम लोगों ने फेंका एंड वी आर नॉट थ्रोइंग इट इन द स्ट्रेट पाथ, मीन्स कि आप ऊपर नहीं फेंक रहे हो उसको या ऊपर से डायरेक्टली नीचे नहीं फेंक रहे हैं. वी हैव थ्रोन इट एट अ पर्टिकुलर एंगल. तो होता क्या है, बॉडी क्या करती है, बॉडी विल मूव, और बॉडी मूव करेगी तो लीनियर डिस्टेंस भी कवर करेगी एंड वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगी. सो when the body moves by covering the vertical distance and horizontal distance without any fuel, कि बॉडी चल रही है, फ्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, और बॉडी मूव कर रही है एंड इट इज कवरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज द वर्टिकल डिस्टेंस. सो इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट बॉडी इज प्रोजेक्टेड to a certain value, or its motion is called the projectile motion. So to define it in a simple way, or in the scientific way, we can say that projectile is the name given to the body which once thrown into space, जिसको हमने क्या किया, स्पेस में थ्रो किया with some initial velocity, उसकी कुछ ना कुछ initial velocity थी, moves thereafter under the influence of the gravity के influence में move करेगी along without having any engine or fuel. The path followed by the projectile is called its trajectory, and motion is called the projectile motion. So when you throw a body with certain velocity, it moves in the space without any fuel, without any engine. So the path followed by the body is called trajectory or projectile, you can say, and the motion is called the projectile motion. Now let us consider, suppose we are having a building, एक छोटी सी बिल्डिंग है हम लोगों के पास, से इसकी जो हाइट है, से इट इज h. ओके, हाइट कितनी है इसकी, से इट इज h. यहां से हमने क्या किया, वी हैव थ्रोन अ बॉडी, एक बॉडी को मैंने थ्रो कर दिया. ओके, सो थ्रो किया तो मींस विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, u है. सो बॉडी विल मूव, ऐसे करके बॉडी स्ट्रेट जाएगी थोड़ा सा, उसके बाद द बॉडी विल कम डाउन टू द अर्थ. ओके, बॉडी क्या करेगी, अर्थ पे आएगी. सपोज यहां पर एक पॉइंट कंसिडर किया P. ओके, इस पॉइंट P पे उसकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, सेड इज u थी, और फाइनली उसकी इस पॉइंट P पे आफ्टर t टाइम यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा. ओके, यहां से लेके यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम t लगा, और उसकी फाइनली उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो उसकी हो गई है, वेलोसिटी विल बिकम से v. ओके, सो यहां पे बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकल वे में कितना डिस्टेंस किया, से इट इज y, ये y है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, से इट इज x. सो अब हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका निकालते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सो वी कैन सिंपली, आई एम राइटिंग इट sx means the distance traveled in the x-axis or the horizontal distance. So we know the equation, it is ut plus half at square. Okay, so sx means x only, initial velocity is u, time is t, and plus half means half only, and a, what about a, acceleration. So horizontal way में body कैसे move कर रही है, it is moving with a uniform velocity, so its acceleration is 0. So we can say 0 into t ka square, so we get x equals to ut. So this is the horizontal distance traveled by the body. Similarly, we can find it out the vertical distance traveled by the body, again the same thing. So the body is moving under the influence of the gravity, so this time acceleration is not 0, it is taken as g. So we can say ut
plus half at square. Its vertical velocity, vertical distance to travel किया है, vertical velocity will be 0 this time. So and the vertical distance will be taken as y. ये वाला पार्ट 0 हो गया, प्लस हाफ मीन्स हाफ, g मीन्स a मीन्स g and t मीन्स t का स्क्वायर. So y equals to 1/2 gt का square. We can find out the value of t from this equation. So when we find out the value of t from this equation, we get x upon u. So put the value here. So y equals to half x upon u का square and how much x upon u का square. So t square means half, x we have put it in place of g. Okay, so this we are getting. So y equals to how much? It will be half g x upon u का whole square. This is the proper form of this equation. अब ये equation अगर मैं यहाँ पे इस equation में if suppose I put 1/2 x और u square को if suppose I put k, अगर suppose इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करते हैं, सो देखो हाफ मीन्स हाफ ओनली कांस्टेंट है, g मीन्स कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, चेंज क्या होगा, x चेंज होगा. सो आई एम राइटिंग इट y इक्वल्स टू k x स्क्वायर, वेयर k जो k है वो कितना है आपका, इट विल बी 1/2 एंड u स्क्वायर, जो k की वैल्यू है कितनी है 1/2 g u square. So in place of that we have put it k. So now this is a quadratic equation. और ये क्या है, quadratic equation है, और every quadratic equation represent a parabolic path. जो भी quadratic equation होगी वो क्या represent करेगी, parabolic path. means कि जो path follow किया है बॉडी ने वो कैसा है, it will be a parabolic path. parabolic path को follow कर रही है means it is moving like this, ऐसे करके मूव कर रही है, स्ट्रेट नहीं मूव कर रही है, बॉडी इज फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ. सो दिस इज प्रूव्ड बाय दिस इक्वेशन व्हिच वी हैव फाइंड इट आउट. ओके, कुछ assumptions होते हैं व्हिच वी हैव टू यूज इन द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो द फर्स्ट assumption, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ओके ऑन द प्रोजेक्टाइल. एयर का कोई रेजिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, वो रेजिस्टेंस नहीं है. सेकेंड, द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल. जो अर्थ का कर्वेचर है उसका भी इफेक्ट क्या है, वो भी नेग्लिजिबल है. देन द इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल. जो अर्थ रोटेट कर रही है उस रोटेशन का भी जो इफेक्ट है वो भी क्या है, नेग्लिजिबल है. एंड द फोर्थ वन, for all point of the trajectory, the acceleration due to gravity is constant in both the magnitude and direction. जो gravity है it should be remain constant for every point. कहीं पर भी point ले लो, अभी मैंने यहाँ पे consider किया, you can take a point anywhere, suppose यहाँ पे ले लिया या इधर ले लिया या we have taken it here. So g की वैल्यू को मैं constant लेके चलता हूँ. So these are some certain assumptions which we have to follow while finding the path of trajectory of the projectile motion. Okay, so it's all for today. कल वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सी द टाइम ऑफ फ्लाइट इसका निकालेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे. ओके, देन वी विल कम टू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टाइल. सो फॉर टुडे ओनली दिस मच. थैंक यू वेरी मच.